Hello students, welcome to the next topic of our subject auditing unit 1, and the topic for today we are going to discuss, that is internal control. तो जैसा स्टूडेंट्स आप लोगों को इस नाम से क्लियर है, इंटरनल कंट्रोल मीन्स द कंट्रोल विच जो कि किया जा रहा है इंटरनली। इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन भी यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किया आप लोगों को। इंटरनल कंट्रोल इज बेस्ट रिगार्डेड एज इंडिकेटिंग द होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल बेस्ट रिगार्ड, हाउ इज इट बेस्ट रिगार्डेड एज इंडिकेटिंग द होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल्स, फाइनेंशियल एंड अदरवाइज। So whether it is a financial control or any other control, it consists of whole system of controls, that is called internal control. Who establishes the system of internal control? इसमें आगे आप देखें, established by the management in the conduct of a business, including internal check, internal audit and other forms of control. तो आज इस टॉपिक से पहले दो टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंटरनल कंट्रोल से पहले इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अवर प्रीवियस वीडियोस। तो इंटरनल कंट्रोल के ये दोनों एलिमेंट्स हैं, जैसे कि इसमें अब इसको रीड कर रहे हैं हम दोबारा से। इंटरनल कंट्रोल इज बेस्ट रिगार्डेड एज इंडिकेटिंग द होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल्स, फाइनेंशियल एंड अदरवाइज, established by the management in the conduct of a business, including internal check, internal audit and other forms of control. This definition is provided by W. Big. So what is the literal meaning of the internal control? Internal control has been defined as being not only internal check and internal audit but the whole system of controls. यही डेफिनेशन को नीचे मैंने क्लैरिफाई किया है कि इंटरनल कंट्रोल में केवल इंटरनल चेक और ऑडिट नहीं आता, बल्कि इसके अलावा वो पूरा सिस्टम वो कंट्रोल का, चाहे वो फाइनेंशियल कंट्रोल हो या वो कोई दूसरा एनी अदर टाइप ऑफ कंट्रोल विच इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय द मैनेजमेंट in order to carry on the business of the company in an orderly manner. ये इंटरनल कंट्रोल इसलिए ज़रूरी है, आवश्यक है, रिक्वायर्ड है, जिससे कि एक कंपनी का मैनेजमेंट अपने बिजनेस को ऑर्डरली मैनर में चला पाए, safeguard its assets and secure as far as possible the accuracy and reliability of its records. So why internal control is required? Because a management of the organization, they may be able to carry on the business in an orderly manner, they may be able to safeguard its assets and they may be able to secure as far as possible the accuracy and reliability of its records. What are the objectives of internal controls? Internal controls, the objective to avoid waste, inefficiency and fraud. क्योंकि इंटरनल कंट्रोल के अंदर ये इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक ये सभी एलिमेंट्स आते हैं, इसीलिए किसी भी तरह के वेस्ट, इनएफिशिएंसी और फ्रॉड को अवॉइड करने के लिए इंटरनल कंट्रोल को अडॉप्ट किया जाता है, अप्लाई किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट इज देयर टू अटेन हाईएस्ट टाइप ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। ये अभी हमने लास्ट डेफिनेशन में भी रीड किया है कि according with the help of internal control, an organization can attain the highest type of accuracy and reliability in the maintenance of accounts and operating data. Third one is there to encourage them and measure how far the policy of the business is being implemented. That is the third objective of internal control, जिससे आप ये मालूम करेंगे organization, the management will be able to encourage and measure that how far the policy of the business is being implemented. And next is there to evaluate the efficiency of performance in all aspects of business activity. एंड टू प्रोवाइड एड मीन्स हेल्प होता है कि आप बिजनेस प्लानिंग में, मैनेजमेंट प्लानिंग में हेल्प करते हो इंटरनल कंट्रोल की हेल्प से, बिकॉज यू आर एबल टू नो द प्रेजेंट सिचुएशन वेयर यू स्टैंड। तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग यू आर गोइंग टू टेक द फर्दर डिसीजंस, जिसमें विद द हेल्प ऑफ इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट विल डेफिनेटली गेट ए टाइप ऑफ हेल्प, ए टाइप ऑफ एड। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. Now the characteristics of a good internal control are there. So there should be a well developed plan of organization
with delegation of proper responsibilities at various levels of operational hierarchy. Hierarchy means of the sequence की there should be a well developed plan of organization. एक अच्छे इंटरनल कंट्रोल की पहली करेक्टरिस्टिक यही होती है कि आप की कंपनी के अंदर एक वेल डेवलप्ड प्लान होना चाहिए जिसमें हर एक एम्प्लॉय को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली डेलीगेट किया जाना चाहिए, वेदर ही इज़ वर्किंग एट एनी of the levels of the organization, whether he is working in the top level, middle level or lower level. Every employee of the company should be delegated with proper responsibilities. So this is the very first characteristic of a good internal control. Next is there should be a scientifically developed system of record procedures. एक record procedure का scientifically developed system होना चाहिए so that management can get transparent records whenever they are required. A system of healthy practices and traditions is also necessary for the performance of duties and activities of various departments of the organization. एक ऐसा सिस्टम जो हेल्थी प्रैक्टिस और ट्रेडिशंस का हो होना चाहिए फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ एंड एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स जितने भी कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हैं. द पर्सनल एंगेज्ड इन द बिजनेस शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी. जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ह्यूमन रिसोर्स इज आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जितने भी एम्प्लॉई हमारी कंपनी वर्किंग है किसी भी लेवल पर, they all should be of high quality and character with a thorough understanding of their responsibilities and a proper background of training and ability. So this is the another characteristic of a good internal control. If you want the result of internal control in a positive way, then obviously your personnel who are engaged in your business or organization, they all should be of high quality and character, who can thoroughly understand the responsibilities of themselves, and they should have a proper background of training and ability. Then it will be easier to make a control over the financial or otherwise control of the organization. So these are the characteristics of a good internal control. Now there is a topic of divisions of internal control. So I have divided in this topic in 7 main points. The main divisions of an overall internal control system cover. जो मेन डिवीज़न होती है वो कौन से कवर करती है. सबसे पहला लिख दिया जनरल फाइनेंशियल कंट्रोल. जनरल फाइनेंशियल कंट्रोल नाम से क्लियर है. दिस कंट्रोल इंक्लूड्स ए प्रॉपर एफिशिएंट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, बिकॉज इट इज़ क्लियर बाय इट्स नेम इटसेल्फ कि ये फाइनेंस से रिलेटेड कंट्रोल को इंक्लूड करता है. तो दिस कंट्रोल इंक्लूड्स ए प्रॉपर एफिशिएंट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, adequate supervision, recording and duplicating system, good efficient staff and maintenance of staff relationship. Because this is a general financial control, and an adequate system of flow of information to the management should be developed through returns and statements submitted by supervising staff. तो ये जनरल फाइनेंशियल कंट्रोल में आता है. नेक्स्ट इज देयर कैश कंट्रोल. नाम से क्लियर है इसको भी, कैश कंट्रोल. दिस सिस्टम इंक्लूड सर्टेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोल फॉर रिसिप्ट्स, पेमेंट्स एंड बैलेंस हेड. Because this control is related with cash, so obviously all the aspects of this control system will be related to cash. Like जैसा मैंने अभी बताया कि it will include all certain important aspects of control for receipts. How many receipts are there, how many payments are there, and what is the balance. A proper system of internal check must operate at all stages. There may be specially deputed officials, including the internal audit staff, who should be made responsible to exercise check at regular and irregular intervals. Due safeguards should be exercised to avoid misappropriation of cash. Next is their employees' remuneration. There have been many cases of defalcation and misappropriation of cash payments to be made to the employee. So the system must cover all sections of employee remuneration and maintenance of records for remuneration. So their preparation and their method of payment should be brought under tight control. Next is their trading transactions. These transactions are related to the purchase, sales, etc. In regard to purchases, effective procedures should be laid down for such goods. Similarly, a good system of procedures should be devised for authorization, recording, handling and accounting of goods sold.
So this portion covers different transactions which are related to trading of an organization. Next is stock maintenance. Everybody knows stock is also necessary. So stock of raw materials, work in progress and finished goods should be properly maintained and accounted for. The flow of goods from outside to the store and again from the store to the processing part and vice versa should be made under an efficient control and supervision. So this part is related with the maintenance of stock, whether the stock relates to uh, raw material, work in progress as well as the finished goods. Fixed assets means capital expenditure on fixed assets should be kept under strict check and supervision. And last is their investment. So the procedure of control in regard to investments covers such measures as authorization, recording of all transactions including the maintenance of records of investment held and safeguarding of documents of title. So this is the main division of an overall internal control system. So these 7 points are there. So we can understand the internal control by this picture easily. So internal control covers all these things. Internal control considers all these things like control environment and risk management, monitoring of controls, control activities and information and communication. So internal controls have a consideration towards all these aspects. So I think we can easily understand the topic of internal control. We will meet in our next video with a new topic. Have a nice day.